age. See, hello students, good afternoon all of you. So in continuation with the last lecture, that is the transition age, today I'm going to start with the transitional poets. And this lecture, which I yesterday also told you, has been designed for you to make you understand that whenever you read properly, you have to follow my rules and regulations according to this class, because this class is especially designed to make you understand कि जब हमको अच्छे से पढ़ाई करना है घर पे, तो हमें ऐसे ऐसे ध्यान दे करके अपने चीजों को मार करके तब पढ़ना है. ठीक है? सो आई ट्राई टू कंप्लीट दीज थिंग्स, एंड जब तक आप कहेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है कि आई विल ट्राई टू गिव मोर एंड मोर important topics in detail. So James Thompson, the first transitional poet who began to write verses, and he showed a lot of fondness for the rustic scenes. And when he came to London in 1725, under a lot of stress of poverty, he wrote a poem known as Winter. And Winter is the first poem of the collection of 4 poems in the poem Seasons. जो poem Seasons है उसमें 4 poem है. तो Winter जो थी उसकी पहली poem थी, and उसके बाद एक के बाद एक poem आती रही. He also made his acquaintance with Arbuthnot, Gay, Pope. He also found patrons, and in 1724-26 he produced a series of tragedies. Who? James Thompson. Nobody knows that he was the person. He is only known that he has written Seasons. He has also written a series of tragedies. उन tragedies का मैं आपको नाम बता रहा हूं. लिखिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में. सोफो निस्बा पहला. दूसरी ट्रेजेडी का नाम लिखिए, so these are the 3 tragedies. एक और लिखा है जिसका नाम है टैंकरेड फोर्थ. इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा. ठीक है? इसको लिखने के बाद फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं that James Thompson published in 1748 The Castle of Indolence, which contains a portrait of himself as an inmate of the castle, and his poem The Seasons first challenged the artificiality of the English poetry and inaugurated a new era by their sentiment for nature. And this poem, Castle for Indolence or The Seasons, which actually pioneered the way towards the Romantic era, though the age was totally classic. The work may be a little imitative, that is the Castle of Indolence, and so we cannot claim it to be one of the highest class, but it is an invitation
of the rarest merit. Any questions, students? Good afternoon. ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया हुआ है। यहां पे आप देखिएगा कैसे आपको डिटेल हम समझा रहे हैं आज, which is not possible in the live classes, but I have taken this initiation to make you understand कि आप घर में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। Oliver Goldsmith, he was a son of a Irish clergyman who went to Trinity College, Dublin, and graduated, then studied medicine at Edinburgh, and wandered from France, Switzerland, and Italy, obtaining a medical degree at some foreign university. He reached London in destitution in 1756 and supported himself with a lot of difficulty as a physician. And he wrote some articles for a magazine known as Monthly Review. He published in 1758 his notable translation of The Memoirs of a Protestant. इसका उसने ट्रांसलेशन पब्लिश कराया जिसका नाम है द मेमोयर्स ऑफ अ प्रोटेस्टेंट। इसको आप लिख लीजिए, जान लीजिए, ये मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। He made acquaintance also with Dr. Samuel Johnson in 1761 and was one of the original members of the club, which became the literary club, which I had explained you yesterday also. Clear? His poem, which is known as The Traveller, was welcomed by the public. And yes, in the same year, that is 1764, appeared his History of England in a series of letters. Then the Vicar of Wakefield, the publication of which has been delayed for unexplained reasons, which appeared in 1766, the Vicar of Wakefield. He also wrote a life of Voltaire, a history of Rome, and his first comedy is The Good-Natured Man. The Good-Natured Man was rejected by the same person, Garrick, David Garrick, but produced at the Covent Garden in 1768 with moderate success. His second comedy is She Stoops to Conquer, again played at the Covent Garden in 1773 with a lot of success. In 1770 appeared The Deserted Village, History of Greece, Animated Nature. ये उसके लास्ट वर्क्स थे। Yesterday I had told you Boswell's Life of Dr. Johnson, जो उसने बुक लिखा है, बायोग्राफी लिखा, that Life of Johnson contains many anecdotes about Goldsmith. And Johnson, who was quite awake to his absurdities, had a high respect for his worth and literary abilities. So देखिए, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम आपको इसकी पोएम भी डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ट्रैवलर। द ट्रैवलर, which was published in 1764, was dedicated and addressed to his brother, a country clergyman. The author, in the character of a traveler, places himself on the summit of the Alps and compares
social and political conditions in the countries that he sees, nothing the inconveniences of each, and endeavoring to show that there may be equal happiness in other states through differently governed from our own. And Johnson contributed uh, some 9 lines to the poem. डॉक्टर जॉनसन ने ट्रैवलर में कुछ 9 लाइंस अपनी कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें एक दो लाइन मुझे याद है, और वो ऐसे थी, टू स्टॉप टू फियरफुल एंड टू फेंट टू गो, हाउ स्मॉल ऑफ ऑल दैट ह्यूमन हार्ट्स एंड्योर. सो ये इसकी स्टोरी लाइन है. Now we come to the deserted village, and the theme of this deserted village is the superiority of agriculture to trade in the national economy. The poet revisits Auburn, Auburn, which is a village hallowed by the early associations, and laments a state of society where wealth accumulates and men decay. Boswell attributes the last 4 lines to Johnson. As far as Goldsmith's miscellaneous poems are important, because they include some of the characteristic humorous and pathetic writing. एक ballad है जिसका नाम है The Hermit. The ballad, which is known as The Hermit, is done in a very sentimental fashion. Then there is Elegy on a Death of a Mad Dog. Elegy on the Death of a Mad Dog is suggestive of Jonathan Swift's Without Swift, Savage Barb, and the fine lines beginning when lovely woman stoops to folly are among the best lines he ever wrote. Clear? So, if we talk about Goldsmith as a man, his life was sacked, and his substance wasted by the crowds of the hungry beggars and the lazy dependents. His purse and his heart were everybody's, and his friends as much as his own. He felt, as he tells us in the poem The Traveller, like a miser who sees that the hoard of human bliss was small. He learnt nothing but the luxury of only doing good to others. He was a machine of pity and charity. So this is a brief introduction about the personality of Goldsmith as a man. And if we talk about his poem, The Traveller, it is actually a philosophical poem which is suggestive of moral qualities which make it more didactic and philosophical and highly thought-provoking poem. Then if we conclude Goldsmith, we can say that yes, he is a worthy man, and with a careful observation, he is a transitional poet. Grace, charm, and amiable good humor. He is in the first flight of English writers. In the words of Dr. Johnson, which he wrote in The Traveller, ये बहुत important lines है.
जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो 4 लाइन उसने लिखी है फॉर हिज पोएम द ट्रैवलर, लास्ट में, वो 4 लाइनें क्या हैं? द लिफ्टेड एक्स, द एगनाइजिंग व्हील, ल्यूक्स iron crown, and Damien's bed of steel, to men remote from power but rarely known, leave reason, faith, and conscience all our own. So these 4 beautiful lines, lines which have lot of meaning, words by Johnson written in The Traveller. So here we finish Goldsmith. Now we move on to Thomas Gray. अब देखिएगा कितना डिटेल में हम आपको पढ़ाते हैं थॉमस ग्रे, और अगर ध्यान से आप सुन लेंगे तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, और इतना माइन्यूट पढ़ा देंगे कि उससे ज्यादा तो शायद आपको विकिपीडिया में भी नहीं मिलेगा. दिस इज हाउ समथिंग इज लर्न्ड. और जब आपको माउंट एवरेस्ट में अपना झंडा गाड़ना हो तो सेल्फ की पढ़ाई ऐसे ही होती है. थॉमस ग्रे basically, who was educated at Eton with Horace Walpole. दोनों लोग साथ पढ़े हैं, हॉरेस वॉलपोल एंड थॉमस ग्रे, कैम्ब्रिज में, एटॉन में, कैम्ब्रिज में. And he accompanied Horace Walpole on a tour on the continent in 1739-1740, somewhere around, but they quarreled in 1741 and returned home separately. Again, their friendship renewed in 1744. Gray then resided at Cambridge, refused the laureateship in 1757, note it down, refused the poet laureateship in 1757, and was appointed professor of history and modern languages at Cambridge in 1768. He was buried at Stokes Poges in Bucks, which is a village with which the elegy in the country churchyard is traditionally identified. देखिए, मैं बहुत कुछ बोल गया इस लाइन में, अब पता नहीं स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया कि नहीं. अगर आपसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ये बना दे कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट विलेज, द नेम ऑफ दैट प्लेस where he was buried, from where that poem is traditionally identified, कोई बता पाएगा? इतना माइन्यूट क्वेश्चन आता है, तो वो आंसर होगा स्टोक पोजेस इन बक्स, which is a village with which elegy in a country churchyard is traditionally identified. Understood, students? Now, he started his work as an English poet, which began in 1742, when he wrote his odes on spring. On spring उसके ओड का नाम है. फिर एक ओड का नाम है on a distant prospect of Eton College. Then on adversity. Then sonnet on the death of West. About the same year, he began the elegy in the country churchyard, which was finished in 1750. आपको शायद याद नहीं होगा या पता नहीं होगा, मैं एक नाम लेने जा रहा हूं, यह भी तक पूछा गया है. द ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट. द ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट. In 1754, Gray finished his Pindaric ode on the progress of poesy, and in 1757, a second Pindaric ode known as The Bard, and these were published by Walpole in 1757. The popularity of the elegy written in a country churchyard led to his recognition as one of the foremost poets of the day, and to the offer of the laureateship on the death of Kali Kibber. कॉली किबर की डेथ हुई, वो पोएट लॉरिएट था, इसके पास पोएट लॉरिएटशिप गई, इसने रिजेक्ट कर दिया. क्लियर? And in the later years,
he devoted a lot of attention to Celtic verses, and in imitation of this, he wrote the Fatal Sisters, the Fatal Sisters, and the Descent of Odin, Odin. In 1769, he took a journey among the English lakes, which is commemorated in the journal published in 1775, which is his most finished prose work. अगर कोई इसका prose work पूछे तो आप बताएंगे journal. And his letters are among the best in the language. Clear? So आपको बेटा बच्चों कैसा लगा, ये डिटेल आपको कैसा लगा, थोड़ा सा मुझे अपने उस पर बताएं. आपको ऐसा लगता है कि जो डिटेलिंग हम आपको कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू सम मोर कॉन्फिडेंस? आपको ऐसा लगता है कि जो हम डिटेल आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मन लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत कुछ और आ गया पर ऑथर पे, ऐसा आपको लग रहा है तो मुझे बताएं कि हाँ सर ये मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे पहले सिस्टम पे चले जाना चाहिए, वॉट एवर इट इज. गेटिंग मोर डिटेल्स तो अच्छा होता ही है स्टूडेंट्स, लेकिन ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती ना, बिकॉज इस तरह से जो पढ़ना होता है देन यू हैव टू गो फॉर अ बैच ऑफ 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर. जैसे कि ऑफलाइन में हम पढ़ाया करते थे, जब स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आके यहाँ पे दे यूज टू लिव हियर फॉर 6 months, फॉर 8 months, फॉर 9 months, फॉर इवन 12 months. ऐसा यहाँ पे लोगों ने किया है और अपने करियर को बनाया है. सो ये तो मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप उस चीज को समझ पाएं और उसको निभा पाएं. जब भी आप पढ़ने बैठें कोई भी किताबों से कैसे भी, सो यू कैन एक्चुअली आपको ये पता रहेगा कि डिटेल कैसे पढ़ते हैं. जब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है तो वो पढ़ेगा कैसे? ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, just 1 minute, one phone has
ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें क्लास को, जबकि हमारा मन था कि यहाँ पे हम इसको पॉज करके और कल्चरल स्टडीज को कवर अप करने की कोशिश करें। तो बल्कि आप क्या कहते हैं कि शुड आई कंटिन्यू दिस लेक्चर, और शुड वी कम टू आवर direct syllabus which we have to cover, and something is left in the cultural studies also. So, or the decision is actually very, चलिए आज एक काम करते हैं, आज मूड बना है तो ब्रिटिश को ही कंटिन्यू करते हैं, और है ना, कंटिन्यू दिस लेक्चर सर। ओके फाइन, एवरीबडी इज सेइंग दैट आई शुड कंटिन्यू दिस लेक्चर, वेल फाइन, मूड हमारा ब्रिटिश का है तो अभी दूसरी तरफ हम नहीं जाते हैं। सी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट अगर कोई आपसे कहे कि डिफरेंशिएट बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसको देखिए दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं। दैट प्राइमरीली देखिए रोमांटिसिज्म क्या था। रोमांटिसिज्म वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ द इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। जो हमारी इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी होती है उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट को ही रोमांटिसिज्म कहते हैं। एंड एट काउंटलेस पॉइंट्स द यूनिवर्स ऑफ सेंस एंड थॉट acquired a new potency of response and appeal to man, and a new capacity of ministering to and mingling with life. The beautiful glory of the lake, of the mountains, the grace of childhood, the dignity of the peasants who are untaught, wonder of the fairies, mystery of the Gothics, all these things springs of the poet's inspiration, and the artist's joy began to flow not at once but in prolonged succession, which is unordered, and not within a limited area but throughout Western Europe, and preeminently in Germany, England, and France. And the word romance, hackneyed and vulgarized as it is, express less inadequately than any other kind of charm, which these sources of the poetry exercised in the common people. They were all to begin with the strange ways of escape from the dead weight of routine. But the romance of which poetry is begotten can never be merely strange. Why? Because it has a subtler fascination which rests partly upon wonder, but partly upon recognition. For its peculiar quality lies in this, that in apparently detaching us from the real world, it seems to restore us to reality at a higher point, to emancipate us from the prison of the actual by giving us the spiritual rights in the universe of mind, exempt from the limitations of matter, time, and space, but appealing at countless points to the instinct for that which endures and which subsists. How was this world thus disclosed by imagination related to the world of the senses, the world of the common sense, in which the mass of men contentedly moved? ये है बेसिकली हमारा जो रोमांटिसिज्म है. And if we talk about classicism,
classicism opposes the arbitrariness of fancy, a pervading rationality to the mysterious, and the unintelligible to the unpruned varieties of nature. Romanticism, on the other hand, makes prominent the qualities conspicuous in the youth of a nation: bright, aimless fancy, awe of the unknown, eager, uncritical delight in the abundance of nature. In classicism, an age of understanding and refinement severely asserts its rights and excludes whatever cannot be brought to its test. Unity of form is blended with eclecticism in subject. Taste of an exclusive age is seen in the choice of the latter, that of an intellectual age in the treatment of the former. And of these two elements, the exclusiveness tends, with the growth of more Catholic culture, to diminish, and thus the antagonism of the two movements tend to dissolve, the more permanent elements of each persisting while the more transitory drop out. And the wide outlook of the Romanticism is accepted by the new generation, which at the same time rejects its willful eccentricities. So हम लोग बात कर रहे थे चूंकि थॉमस ग्रे की. So Thomas Gray is actually a transitional poet, but not as Collins. Not as Collins. With Collins, a new inspiration actually reconciled itself, although not always happily. With Gray, the groups of tendencies are not in the same relationship. He obeyed the dominant preoccupation of a labored art. The poetry of Gray abounds in the seeds of the coming age. It is wholly animated by emotions which around it are preparing the regeneration of literature. To Gray, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो उसका वर्क है, it may be divided into two unequal parts. Most of these short poems are occasional compositions in accordance with the type bequeathed to the 18th century by the Restoration, and the range from the light playful verse to the Pindaric ode develop commonplace, theme with the allegories, and personify all the virtues and all the vices. His imagination is active. It is the Gray's classical poetry which contains within itself the effects of the subtle fitness and suggestion which foreshadows Romanticism. बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद उतना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो आज कर लेते हैं अपने मन का और आपके मन का. और देखिए, और हम आपको डिटेल पे ले चलते हैं कि कैसे डिटेल की पढ़ाई होती है. जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कैसे पढ़ते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, और कितना साउंड अपने को करते थे कि कभी भी जीवन में पीछे पलट के देखना ना पड़े. तो इस तरीके से आप कल को आगे पढ़ सकते हैं.
ग्रे की जो पोइट्री है वो बेसिकली 3 पीरियड में डिवाइड की जा सकती है. देखिएगा हाउ मच डिटेल वी आर गोइंग इनटू एंड यू विल एक्चुअली लव इट. ग्रे, इट कैन फॉल इनटू 3 पीरियड्स. ठीक है. पहला, ग्रे का अर्ली ओड्स विच इज अबाउट 1742, of which the best known are On Spring and On a Distant Prospect of Eton College. Of Eton College. Clear? ये हो गया आपका. सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड आता है 1750 टू 1757. ये इसका हो गया सेकेंड पीरियड. ये हो गया इसका फर्स्ट पीरियड. ये इसका हो गया थर्ड पीरियड. 1750 और 57 में जो इसने पोएम लिखा है उसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. हम शॉर्ट में लिख देते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. दूसरा आप लिख लीजिए द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी. द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी. और नंबर 3 में लिख लीजिए द बार्ड. क्लियर? एंड द एलिजी, perhaps the most widely known and loved of English poems, is the finest flower of that literature of melancholy which John Milton's Il Penseroso, आपने याद होगा एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ये दो कंपेनियन पोएम्स थी उसकी. So which Milton's Il Penseroso, acting upon the awakening romantic sense of the second quarter of the 18th century, brought forth in a remarkable profusion. A large part of the charm of the elegy comes from the poet's personal, sensitive approach to his subject. He lingers in the churchyard, noting the signs of the approaching nightfall, until the atmosphere of the twilight musing is established, after which his reflections upon life and death have a tone of sad and intimate sincerity. If you talk about this, कहाँ गया? Yes, the progress of poesy. This is a Pindaric ode. किस प्रकार का ये पिंडारिक कोड है? द सेम टाइप एज ड्राइडन्स एलेक्जेंडर्स फीस्ट. ड्राइडन का एक वर्क है एलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये उसी प्रकार का पिंडारिक कोड है.
ये उसी प्रकार का है जैसा कि ड्राइडन का अलेक्जेंडर्स फीस्ट। इट हैज the too conscious elegance of diction and employs the pseudo-classic mythology of Queen Anne's poetry. But in the richness of its music, it shows the romantic temper. If you come to the Bard, which is more distinctly romantic, both in subject matter and in treatment. An ancient minstrel, the last of the Welsh singers, escaped from the Edwards massacre, stops the king in the wild mountain pass, and prophesies the terror which are together over his descendants. This poem, with its imaginative rekindling of the passion of the ancient and the perished people, shows, like Collins' Ode on the Superstitions of the Highlands, that reversion of the Middle Ages for inspiration, which soon became the leading feature of the Romantic art. And now, the third period. The third period of Gray's production shows how deep a hold medievalism had already taken on him. He mastered the Old Norse material, N-O-R-S-E, Old Norse material. इसको खूब पढ़ा था, खास तौर से इसका ट्रांसलेशन, एंड स्टडीड इवन वेल्श को भी खूब पढ़ा था, ओल्ड नॉर्स मटेरियल के ट्रांसलेशन को पढ़ा था, वेल्श को पढ़ा था, एंड द फ्रूट्स ऑफ दीज रिसर्चेस वेर टू पावरफुल ट्रांसलेशंस, एंड विच इज पिक्चर एज द मोस्ट रोमांटिक हार्ट को डिजायर. और वो दो नाम हैं इन थर्ड सेक्शन में जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द फेटल सिस्टर्स एंड द डिसेंट ऑफ ओडिन, 1761. अच्छा लगा आपको? समझ में आया ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना डिटेल्स में आपको अच्छा लगा? बहुत सारी हम लोगों ने अच्छी बातें पढ़ ली थॉमस ग्रे की, बहुत सारी. अब थोड़ी सी हम लोग इसके डिफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं. द डिफेक्ट्स ऑफ, जैसे हर बड़े राइटर का प्लस एंड माइनस होता है, उसी प्रकार से थॉमस ग्रे के डिफेक्ट्स को समझते हैं. सबसे पहला चार्ज जो थॉमस ग्रे के ऊपर लगता है, चलिए बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स को, एंड बट वी कैन नॉट मेक इट कंटिन्यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज इट इज एक्चुअली, जैसे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना इस समय, ये करीब करीब 12 महीने का कोर्स है. इस तरह से पढ़ना होता है, जब 12 मंथ्स. ऑब्सक्यूरिटी, पहला जो चार्ज लगा है इसके ऊपर, that is obscurity, Thomas Gray पे. The first charge against Gray leveled by the critics is that of obscurity, which is twofold: the obscurity of subject as well as the obscurity of language. The obscurity of subject, the obscurity of language. The obscurity of subject is a charge which has lost its ground today due to the expansion of knowledge and the study of the history of the other countries. And as regards as the history of the obscurity of language, it will have to be admitted that Gray did not possess the sufficient creative force to fuse the contrary impulses of the romantic spontaneity and the classical
lucidity in his works of clarity and preciseness. तो ये रीजन है उसकी ऑब्सक्यूरिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्सक्यूरिटी ऑफ लैंग्वेज का जो इसके ऊपर चार्ज लगता है. क्लियर? तो पहला तो डिफेक्ट आपको ये हो गया. द सेकेंड जो डिफेक्ट इसके ऊपर चार्ज लगता है दैट इज excessive use of personifications. P means personifications and A means allegory. Excessive use of personifications and allegory, and this is a charge against Gray, which of course cannot be wholly uninspired and appears to be a load surcharged with the allegorical significance. And not only this, even the allegorical values sometimes becomes doubtful when the personifications are used without any poetic conceptions behind them. जब poetic conception उसके पीछे है ही नहीं तो personifications automatically doubtful हो जाते हैं. तो ये excessive use of personification and allegory इसके ऊपर चार्ज है. Clear? The third charge इसके ऊपर जो लगा है वो है artificiality. Gray was a disciplined poet, but the tendency of the lucid attention, care of the details, a careful construction, mar his work of beauty and grace. Though the craze of Gray to give a perfectly finished poem, carefully versified and having a stately diction, is responsible for the unnaturality of his style, he avoids commonplace and uses such compound words as feathered king, quote unquote में feathered king. For an eagle, eagle के लिए वो क्या इस्तेमाल करता है? Feathered king. Or phrases like ruddy drops that warm my heart, RUDDY, ruddy drops that warm my heart. Yeah, what is ruddy drops that warm my heart? It is for the blood fondness. And for using the typical objective before nouns is another example of his artificiality. A few adjectives like blue-eyed pleasures. मैं लिख देता हूं आपको. Blue-eyed pleasures. ठीक है. Frantic passions. Frantic, etc. are the examples of his artificiality. Clear students? से ये और डिटेल हो गया आपको. अब मतलब डिटेलिंग का कोई अंत नहीं होता है स्टूडेंट्स. आप शायद विश्वास नहीं कर पाओगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम इस ऑथर को अगले एक हफ्ते तक पढ़ा सकते हैं. फॉर 1 वीक मोर, फॉर 1 आवर पर डे. मतलब 7 घंटे तक हम और थॉमस ग्रे पे बोलेंगे और 7 घंटे तक थॉमस ग्रे खत्म नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड दिस इज कॉल्ड लव फॉर लिटरेचर. दिस इज कॉल्ड द पैशन फॉर लिटरेचर, द फायर इन योर हार्ट. जब तक वो फायर, वो पैशन, वो प्यार नहीं होगा लिटरेचर से, तब तक लिटरेचर आपको अपना नहीं बनाता. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू फॉर द स्टूडेंट्स who qualify with a lot of labor, whether it is NET or whether it is IES mains in English literature. आप जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं हमारे लेक्चर को, अगर आप में से कोई भी IES मेंस का एस्पिरेंट होगा, प्री आप निकालो, मेंस की गारंटी मेरी. सो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे, प्री निकालो, मेंस मेरे पास. सो तो ये है इसका डिटेल. इतनी डिटेल में ऐसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, जितना कहिए उतना हम पढ़ा सकते हैं.
बट जैसे अगर हम आपको बताएं कि थोड़ा सा आप इसको और एंजॉय करिए कि डिटेल्स में हम कहां तक जा सकते हैं, बस ये लास्ट में इस पे फिनिश कर दूंगा। सपोज करिए हमने यहां लिखा द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। अभी आपने देखा कि मैंने आपको प्रोग्रेस ऑफ पोइजी के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब इसका और डिटेल देखिए। द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी इज रिटन इन द पिंडारी कोड। पिंडार कौन था? पिंडार वॉज द ग्रेट ग्रीक लिरिक पोएट who acquired a lot of fame at an early age and employed by many winners at the games to celebrate their victories. And the only complete poem of his that are extant are his epinisia. Epinisia जो extant है, EXTNT. But he wrote many kinds of verses and fragments of these survive, and he exercised a great influence on Latin poetry. किसके बारे में बताया मैंने? पिंडार के बारे में. Which and this progress of poesy is written in the Pindaric Ode. So this is his complete poem Epinisia by Pindar. ठीक है. अब ओड क्या होता है? What is the ode? Pindaric ode. पिंडार आपने देख लिया. ओड क्या है? What is ode? Ancient literature में a poem intended or adapted to be sung was called an ode. And in modern use, a rhymed lyric, often in the form of an address to somebody. Generally, it is very dignified or exalted in subject, feeling, and style is called an ode. Usually, it should not be more than 150 lines in length. And the different forms of the Greek ode have been variously imitated in English literature. Pindaric odes, imitated from the choric odes of Pindar, were first attempted by Abraham Cowley, and a fashion was set which lasted until the time of Gray as his Progress of Poesy and the Bard. And these odes were normally divided into strophe. ये किसमें divided होते थे? Odes. They are divided into strophes. STROPHE. स्ट्रोफे बोलते हैं. Antistrophe. And epode. A series of 3 stanzas, of which the third differed in the metrical form from the first 2. But the early view of Pindar assumed a great irregularity of meter than actually existed. A supposed irregularity which is imitated, for example, जो मैंने आपको बताया, Dryden's Alexander's Feast. Anything more, students? Students, anything more? So it was I think, undoubtedly, it was a good lecture for all of you. And Anjali, Matthews, Neha, Nisarga, Rabinder, Shushmita, Sahinur, Saman, all of you, and many students who are not in the not present here, but they might be listening to me. I hope you will work accordingly and हमारी मेहनत को सफल करिएगा
जो कि हमें आपसे उम्मीद है। और कल मुझे किसी भी स्टूडेंट का, एक दो स्टूडेंट्स के अलावा मेरे पास किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया कि सर वी वुड लाइक टू be a part of the test series session and an extended 1 hour program which we may decide with the top rankers. So today would be the last day for all of you to ping me and tell me who are interested, who are not. उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि जब सब यस करेंगे तभी इसको हम कोलैबोरेट करा पाएंगे। अगर सब यस नहीं करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 बच्चे हैं, तो अगर 100 आउट ऑफ 100 टेस्ट सीरीज ऑब्लिक क्रैश कोर्स 1 आवर एक्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म लेते हैं तो ये कंटिन्यू क्लास चलेगी। और अगर आप लोगों में से मान लीजिए 20, 25 वॉट एवर इट इज आए स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक नया बैच खुलेगा, वहां पे वो बच्चे एंटर करेंगे जो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, एंड दे विल ओनली एंटर दिस प्लेटफॉर्म। जैसे मान लीजिए क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद फिर वो बच्चा उसी समय दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के यहाँ पे एंटर करेगा। हम रहेंगे यहीं, जाएंगे नहीं, बट द लिंक विल बी सेम, but the classroom will be different, where those students will be entering, those who will be taking admission. इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे अपने जो खुद के स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो जो आते हैं वो इसमें जाएं या इसमें टोटल के टोटल जाएंगे। फाइन, आज के बाद मैं इस चीज को दोबारा नहीं बोलूंगा। तो वट एवर इट इज यू मे टेल मी, बिकॉज इट हैज बीन डन, इट हैज बीन ओनली फॉर यू एंड इट इज अ ग्रेट। और इसमें तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मुझे सब मना कर देते हैं तो बहुत मेरी मेहनत बचेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना बहुत जबरदस्त मेहनत है। मतलब इट इज समथिंग आई वुड लव टू, बट it is you that who has to take the initiative. Okay students, so meet you tomorrow with some other thing. Thank you.